ahead and we can talk about adjacency list. What is the adjacency list mechanism is telling you? Adjacency list mechanism is telling you each vertex should hold each vertex should hold the list of adjacent vertices. हर एक वर्टेक्स में हम लोग एडजेसेंट वर्टाइसेस का लिस्ट रखने वाले हैं. Okay, that is good. So 0 1 2 3 4 5 6 is 0 1 2 3 4 5. आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, it is kind of a array of vertices that I'm getting, and each vertex is going to have a kind of a linked list. Each vertex is going to have kind of a linked list. Okay, it is going to have a linked list. तो चलो let us go ahead. For non-weighted graphs, only neighbor vertices are stored. ये कॉमा गलत जगह पे गया है. For non-weighted graph, only neighbor vertices are stored. अगर वो weighted graph है, for the weighted graph, you need to store both. What is that? Neighbor vertices as well as weights of connecting edges. आपको दोनों store करना पड़ेगा. So what is that? I'll give you example. Have a wait for a minute. Correct? यहाँ पर करके देखते हैं और उसके बाद में we will see the rest of the stuff. ये आपको यहाँ पर दिख रहा है? ये जीरो के adjacent vertices कौन कौन से हैं? Take a look at the diagram and tell me zero के adjacent vertices कौन कौन से हैं? I find that adjacent vertices for zero are nothing but 1, 2 and 3. So that you form the linked list over there. A 1 के adjacent कौन कौन से हैं? A 1 के adjacent है 0, 2 and 3. नहीं 0, 2 and 4. Am I correct? Yeah. A 2 के adjacent कौन कौन से है? Take a look at the diagram. 2 के एडजेसेंट कौन कौन से है? 2 के एडजेसेंट है 0 एंड 1. 3 के एडजेसेंट कौन कौन से है? 3 के एडजेसेंट है 0, 4 एंड 5. और 4 के एडजेसेंट कौन कौन से है? 4 के एडजेसेंट कौन कौन से है? 1 एंड 3. ओके, 4 के एडजेसेंट है 1 एंड 3. फाइनली 5 के एडजेसेंट कौन कौन से है? 5 का एक ही एडजेसेंट है, दैट इज नथिंग बट 3, एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज नथिंग बट माय नॉन वेटेड ग्राफ. ए नॉन वेटेड ग्राफ के लिए इट इज दैट सिंपल, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. बट द क्वेश्चन इज दैट सर अगर वो वेटेड ग्राफ हुआ तो, ओ अगर वो वेटेड ग्राफ हुआ तो प्रॉब्लम ये है वेटेड ग्राफ के अंदर, टेक अ लुक एट दिस, वेटेड ग्राफ के अंदर देयर विल बी आल्सो वेट्स एसोसिएटेड. लेट्स से ये अभी जो थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, ये वही एग्जांपल है. इट इज 7489562, 7489562, 7 4 8 9 5 6 2. I hope you are able to see that. And now the question is that in this particular case I'm saying that don't store only the don't store only the vertices but also store the edges. Go ahead, store the edges. So edges का weight भी store करो. 0 to 1 का edge का weight है 7. 0 to 1 0 to 2 का weight है 4. 0 to 3 का weight है 8. कंटिन्यू फर्दर. 1 से weights कौन कौन से है? It is 7, it is 9 and it is 5. राइट, यू कंटिन्यू फर्दर. 2 से, 2 से जाने वाले के weights कौन कौन से है? इट इज लाइक 4 एंड 9, 4 एंड 9. 3 से जाने वाले weights कौन कौन से है? 3 से जाने वाले weights है इट इज 8, 6 एंड 2. 8, 6 एंड 2. तो हमको यहाँ पर दो दो चीजें रखनी पड़ेगी, वेट भी रखना पड़ेगा और ये भी रखना पड़ेगा. तो जब लिंक लिस्ट बनाओगे तो लिंक लिस्ट बनाते वक्त यू नीड टू टेक केयर कि लिंक लिस्ट एक चीज की नहीं होनी चाहिए, लिंक लिस्ट दो चीजों की होनी चाहिए. ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके अंदर सिर्फ डेस्टिनेशन वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, इट शुड ऑल्सो हैव द वेट इन इट. चलो कंटिन्यू फर्दर. ए 4 का पूरा करो. फॉर द 4 इट आई गेस 5 एंड 6. मूव ऑन. दिस इज 5, 6 and last one it is 2. Is this clear to everyone? Yes, I'm talking about कि हम लोग adjacency list कैसे बना सकते हैं. By the way, what about the space complexity? इसका space complexity कितना है? आपको डायग्राम देख के पता चल रहा है कि आपको वर्टाइसेस के लिए जगह लग रही है एंड प्लस जितने टोटल नंबर ऑफ एजेस है उनके लिए भी जगह लग रही है. Isn't it?
यस, वर्टाइसेस के लिए जितनी जगह लग रही है इट इज वी, और प्लस जितने एजेस के लिए जितनी जगह लग रही है इट इज ई. सो आई कैन सिंपली से दैट इट इज वी प्लस ई. मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इट इज मल्टीप्लीके एडिशन है. सो स्पेस फॉर वर्टाइसेस प्लस स्पेस फॉर एजेस, it is space for vertices and space for edges. You please make a note of this. That is good. और सेम थिंग सिमिलर यहां पर भी वही करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. तो सर एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज बेटर और एडजेसेंसी लिस्ट इज बेटर, which method is better? It depends on what kind of graph that you have got. Take a look at this. If graph is sparse graph, what is sparse graph? Sparse graph ये कोई concept नहीं है, वापिस से ये English है. The sparse graph is simply saying that sparse graph वो होता है which has got fewer number of edges. Let's say, like for example, अगर आपके पास total 10 vertices है, ये 10 vertices है, तो maximum कितने edges हो सकते हैं? 10 वर्टाइसेस है तो मैक्सिमम कितने एजेस हो सकते हैं? कंप्लीट ग्राफ का फॉर्मूला आप लोग फॉलो कर सकते हो. अगर 10 वर्टाइसेस है तो मैक्सिमम कितने एजेस हो सकते हैं? ए 10 इंटू 9 प्रोबेबली 90, मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूं. सो टोटल 90 एजेस इट कुड बी. लेकिन मान लो मेरे पास 10 वर्टाइसेस है, प्लीज पे अटेंशन, मेरे पास 10 वर्टाइसेस है बट देयर आर ओनली 20 एजेस. 10 vertices but there is only 20 edges. There can be 90 possible maximum edges but सिर्फ 20 edges are there. तो ऐसे ग्राफ को मैं कहूंगा स्पार्स ग्राफ. स्पार्स ग्राफ क्योंकि वहां पर एजेस आर स्पार्स, दे आर वेरी रेयर एजेस आर देयर, सो इसको हम लोग कहते हैं इट इज स्पार्स ग्राफ. व्हाट इज डेंस ग्राफ? द डेंस ग्राफ इसको हम लोग कहते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस डेंस ग्राफ, जहां पर बहुत सारे एजेस है. इज वेरी क्राउडेड काइंड ऑफ ग्राफ कि 10 vertices आर देयर एंड देयर आर 80 एजेस आर देयर. 10 vertices are there, 80 edges are there, so that is something you can say that is a dense graph. क्योंकि वहां पर it is very crowded kind of graph I am able to see that. तो क्वेश्चन ये है मैक्सिमम मतलब मोर एंड मोर नंबर ऑफ एजेस वी कैन से दैट इट इज डेंस ग्राफ. हाँ रुको, तो सर एडजेसेंसी लिस्ट कहां पर अच्छा होता है? इफ ग्राफ इज स्पार्स ग्राफ, दिस implementation is more efficient. This implementation is more efficient as compared to adjacency matrix. तो अगर आपको पता है आपके नंबर ऑफ एजेस कम होने वाला है, then better you prefer for adjacency list mechanism, not not adjacency matrix mechanism. All right. तो सर इसको भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे. हाँ यस आई कैन इम्प्लीमेंट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. और वैसे ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट यूजिंग जावा. क्यों? क्योंकि जावा के अंदर हमारे पास रेडीमेड लिंक लिस्ट है, सो हम लोग खुद की लिंक लिस्ट यहाँ पर नहीं बनाने वाले. इट इज वेरी क्लियर. जावा प्रोजेक्ट, आई एम सेइंग दैट दिस इज अनदर ग्राफ दैट आई वांट टू मेक, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं, नाउ इट इज एडजेसेंसी लिस्ट एंड आई वांट टू मेक इट काइंड ऑफ अ नॉन वेटेड वन. एंड टू मेक इट काइंड ऑफ नॉन वेटेड वन. Okay, that is good. You click on next, you click on finish. Done. Now you continue further. Inside this I want to create a class, new class. You put some package and another package you want to write it. It is the adjacency list, adj list, non-weighted, a non-weighted graph main, something like this. All right. Class is adjacency list. It is non-weighted graph. It is adjacency list and non-weighted graph. That is something that I want to build it. Let us continue further. How you are going to make this? Again, something similar. You still need the vertex count. You still need the edge count. It is in front of you. And you continue further. Private. अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर मुझको क्या करना है? यहाँ पर मुझको क्या करना है? टेक अ लुक एट द डायग्राम एंड डायग्राम शुड टेल यू आपको क्या चाहिए. आई एम एबल टू सी दैट आई नीड अ काइंड ऑफ एरे. आई नीड एरे, बट एरे किस बात का चाहिए? आई नीड एरे, बट एरे किस बात का चाहिए? ये मुझको एरे लिंक लिस्ट का एरे चाहिए. ओके दैट इज गुड. सो यू कंटिन्यू फर्दर. मुझको एरे चाहिए, ये पक्का है. सो एडीजे लिस्ट इज गोइंग टू बी बेसिकली द एरे. सो ये एरे चाहिए, ये पक्का है.
बट ये एरे किस बात का एरे चाहिए? आई एम सेइंग दैट आई नीड अ एरे ऑफ लेट्स से लिंक लिस्ट। अगर आप लोग लिंक लिस्ट ले लो, एरे लिस्ट ले लो, चॉइस इज योर्स, उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, isn't it? So you just create that, and that is what all I'm looking for. Is it possible? Absolutely. Continue further. Continue further. I need the constructor. You need a constructor. Now inside constructor, जो लोग रुको जरा, क्वेश्चन में बाद में पूछता हूँ. Integer vertex count. I'm taking it as an argument. I'm making vertex count is equal to 0. Age count is equal to, नहीं, vertex count is equal to vertex count जो हम लोगों ने पास किया है वो. Age count I'm making it equal to 0, and you continue further. For I is equal to 0, I is less than whatever number of vertices are there. अब ये जो मेरा array है वो array null pointer का array है, मुझको null pointer का array बिल्कुल नहीं चाहिए. What I'm looking for is that it is a list of I is equal to new linked list. न्यू लिंक लिस्ट. तो यहाँ पर मैं नल पॉइंटर्स नहीं रखना चाहता हूँ. इंस्टेड ऑफ नल पॉइंटर आई वांट टू कीप सम डेटा ओवर देयर. आई वांट टू कीप सम डेटा ओवर देयर. आई वांट टू कीप द एम्प्टी लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट. ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है? आपको कुछ याद आ रहा है ये देख के? यस, हमने जो खुद का हैश टेबल इंप्लीमेंट किया था, हम लोगों ने ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यूज किया था. तो अब से जिन जिन लोगों ने हैश टेबल का प्रैक्टिकल किया था, हैश टेबल का पेपर वर्क किया था, आई एम वेरी श्योर दोज पीपल शुड बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल जोन. दे सी दैट अरे यार ये तो वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इससे पहले किया था. People who have not done at that time, probably they say, sir, now we are very confused. If you are very confused, go back and see the video of the hash table. अब हम लोग आगे जाते हैं. Public void accept and public void display. All right. Okay, you continue further. You start with accept and display method. What all you want to accept? That is something similar, you know. उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है ऐसे मुझको बिल्कुल नहीं लग रहा है. सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपका जो नॉन म्यूटेड ग्राफ था उसका जो भी हमें इनपुट करना था, आई गेस इट इज क्वाइट सिमिलर स्टफ. इनपुट तो सिमिलर है, इनपुट तो सिमिलर है, हाउएवर ऐड करने का तरीका शायद अलग हो सकता है. नॉट अ प्रॉब्लम. एंड यू सी दैट योर बेसिक्स आर स्टिल इन प्लेस. अभी भी हमको नंबर ऑफ एजेस लेने हैं और हमको सोर्स और डेस्टिनेशन लेना है. ओके, लेकिन सोर्स और डेस्टिनेशन लेने के बाद में क्या करना है? आप करना क्या है? वो जो सोर्स की जो लिंक लिस्ट होगी, प्लीज हैव अ लुक एट दिस. अगर मैं कहता हूं कि वन इज एडजेसेंट, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? जीरो के लिंक लिस्ट में जाके, जीरो के लिंक लिस्ट में जाके वन ऐड करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम वन के लिंक लिस्ट में जाके जीरो ऐड करना पड़ेगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जब मैं कहता हूं कि थ्री इज एडजेसेंट टू जीरो, थ्री इज एडजेसेंट टू जीरो, तो जीरो के लिंक लिस्ट में जाके मुझको थ्री ऐड करना पड़ेगा, और थ्री के लिंक लिस्ट में जाके मुझको जीरो ऐड करना पड़ेगा, और फिर मुझको जीरो ऐड करना पड़ेगा. तो जो आप लोग कह रहे हो उसको प्लीज जाके इंप्लीमेंट करो. क्या कह रहे हैं हम लोग? सो एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ source you want to add destination into that. Okay, that is good. And adjacency list of destination you want to add the source into this. By the way, ये ग्राफ हमारा नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है. फ्रॉम फॉर डायरेक्टेड ग्राफ delete this line. This line is not needed. Correct? That's it. Rest everything is same. Okay, it is that simple. Yes, it is absolutely that simple. Nothing much we need to do it. All right. And then you continue further. ये बार बार मेरे को वार्निंग क्यों दिखा रहा है? अच्छा, सप्रेस वार्निंग बता रहा है. ठीक है, आई कैन स्किप दैट. एंड देन यू कंटिन्यू फर्दर. नाउ हाउ डू आई डिस्प्ले इट? आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले इट लाइक द लिस्ट ओनली. अर्लियर जैसे हम लोग डिस्प्ले कर रहे थे. सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू फर्दर. If we have got an array, and this array is like for the given number of vertices, for the given number of vertices, you continue further. What is the next job to be done? I want to print आपका vertex कौन सा है? Okay, let me print मेरा vertex जो है वो vertex है I. A for the ith vertex, अरे काम करते हैं उसका नाम हम लोग चेंज कर, let's say v vertex. So let's say I'm talking about the vertex v, and for the vertex v, what I want to do? I want to access all the edges. We want to access all the edges, all the edges. So it is like a simply kind of linked list that you need to traverse. और हर एक लिंक लिस्ट के अंदर जो जो आपके डेस्टिनेशन वर्टेक्सेस है, that you want to take it. So adjacency list of the current vertex. This is a linked list in itself, I guess.
So if this is a linked list in itself, it is a list of V. It is a linked list in itself. So I'm just simply saying that let me collect it over here. All right. Error क्यों दे रहा है? ऊपर टाइप मिसमैच का एरर होगा. इट इज वेरी सिंपल. और वैसे मैं यहाँ पर इंटीजर लिख सकता हूँ क्या? आई एम डाउटफुल. If I writing integer over there, then there's no absolutely no problem. So let us go ahead. You get the destination and then just print that linked list. Yeah, how do you print that linked list? System order. Let me print the destination element and let me print like this. So chalo, this looks good. You know, this is my linked list is ready. And my linked list is ready. And ultimately, after the linked list, I want to print the empty line. तो मैंने क्या किया है, मैंने वर्टेक्स का नंबर प्रिंट किया और उसके बाद में वो लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करके मैंने प्रिंट कर दिया है, सो दैट आई कैन शो यू जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था वैसे मेरे को आउटपुट दिख रहा है नहीं दिख रहा है. आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ इट. सो इज इट सो अ लुक लाइक. चलो रन करके देखते हैं. हाउ डू यू रन दिस? अगेन दैट विल गो इन क्वाइट सिमिलर वे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था. ऑन द पैरेलल वे हम लोगों को वहां पर भी वही करना है, कोई बड़ा तीर नहीं मारना है. ओनली थिंग, ग्राफ हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स का नहीं क्रिएट करना है, ग्राफ हमें एडजेसेंसी लिस्ट का क्रिएट करना है. नाउ दैट इज ओनली चेंज. एडजेसेंसी लिस्ट नॉन वेटेड ग्राफ आप लोग बना रहे हो. ओके, दैट इज डन. दैट्स इट. नाउ विल इट वर्क? यस, इट शुड वर्क. इनपुट हम लोग सिमिलर ले रहे हैं तो वापस से आई जस्ट कॉपी पेस्ट even the same input from there. Control C, Control V. You right click, you say run as Java application. You run a Java application. Okay, sorry, comment paste नहीं करने थे. Okay, I need to only copy this much of part and then I can run this. मैंने comment slash star भी copy paste किया, कोई बात नहीं. Oh, oh, null pointer exception. Oh, sorry, silly mistake. Adjacency list, we forgot to just allocate the array first. A linked list and I need to allocate the array first. That is like super silly mistake. कोई बात नहीं. I guess now we have allocated the array. And now is that okay? Now this should work. Now we allocated the array. Array allocate किया और array के अंदर जो भी था वो हम लोगों ने ये कर दिया. I hope you are able to see the output. And it is similar output. एक काम करता हूँ मैं एक display method भी यहाँ पर एक system.println में डाल देता हूँ. What we are trying to display? We are trying to display the adjacency list. We are trying to display the adjacency list. Let's see, and then you can compare this output with the diagram that we are getting. So जो diagram हमने बनाया था, इस 0 के लिंक लिस्ट में 1 2 3 था, 1 के लिंक लिस्ट में 0 2 4 था, इसमें 0 1 था. Are you able to see similar diagram over there? अरे मैच हो रहा है क्या? Yes. So I'm saying that this is like an adjacency list mechanism that we come up with. Go ahead, copy paste it, run it at your place, and you check that. आप लोग कॉपी पेस्ट करो, मैंने डायग्राम आपके सामने ओपन करके रखा है सो दैट यू कैन हैव अ कंपैरिजन एंड यू कैन चेक वेदर इट इज गोइंग वेल नॉट गोइंग वेल. तो आपका जो आउटपुट, आपको जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट दिख रहा है वो, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो, चेक इफ इट इज मैचिंग. As I said that this is quite similar to the hash table structure. So जैसे हम लोगों ने hash table के लिए डायग्राम बनाया था, it is an array of list. Again link list लेना कोई जरूरी नहीं था, आप लोग array list भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Some sort of a list is important, बाकी कुछ नहीं है. Let me know if it worked for you. अब ये नॉन वेटेड था, ये नॉन वेटेड का था इसलिए हम लोग को सिर्फ डेस्टिनेशन रखना था, उतने में अपना काम बन गया. डेस्टिनेशन रखना था, उसमें अपना काम बन गया. अगर आपको ये रखना है, क्या कहते हैं उसको, अगर आपको वेटेड ग्राफ बनाना है तो आपको सिर्फ डेस्टिनेशन रख के आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है. यू विल ऑल्सो नीड समथिंग मोर, यू विल ऑल्सो नीड द वेट टू बी केप्ट. सो वो कैसे करेंगे? डोंट वरी, मैं आपको क्विकली वो भी करके दिखाता हूँ. इट इज जस्ट अगेन सिंपल कॉपी पेस्ट. मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, उसके बाद में हम लोग ब्रेक लेंगे
and then we will go for the main core algorithms. core algorithm, breadth first search, depth first search algorithms, जो हम लोगों ने ट्री में देखा है, लेकिन ट्री का algorithm अलग है, ग्राफ का algorithm थोड़ा सा अलग है. चलो, look like it is working well for most of you. Going good. Okay, it's working. I'm going ahead. If it is working, I'm going ahead. And we are going to adjacency list, non-weighted. I'm looking for adjacency list, but the weighted graph. Adjacency list, but weighted graph. I just copy pasted the whole project actually. Good. Cover the adjacency list, but weighted graph. Yes, that is in front of you. And into this, हम लोग non-weighted की बात नहीं कर रहे. We are talking about the weighted implementation. Okay, it is weighted implementation. I've changed that. You go ahead. Not really non-weighted. Again, I'm looking for the weighted graph implementation. That is also okay. But now the serious problem over here is that I cannot keep it only integer over there. If I keep it only integer over there, what is there? You are keeping only the destination. You are keeping only the destination. हमें सिर्फ destination नहीं चाहिए, हमें उसके साथ साथ weight भी चाहिए. I hope you are able to visualize the problem. And if you are able to visualize the problem, let me just go ahead and let me create another mini class for this, a class age. And again, I prefer to have it as a kind of a static member class, ताकि उसके private members मैं directly access कर सकूं. And what you want for this, I want integer, let's say source, we can have integer destination, we can have, and we can even have the weight for that. एक source भी है, destination भी है, weight भी है. You can have kind of constructor over there, not a problem. And if you need, we can also have, if you need, we will need a parameterized constructor also there. Okay, we also have got a parameterized constructor there. And for that sake, we can also have something called the toString method. हम लोग यहाँ पर एक toString method भी लगाते हैं. It is there. So I got the toString method as well. Okay, that is good. A toString method हम लोग यहाँ पर क्या दिखाना है, एक कहाँ से कहाँ तक का एज है. So let me just put it, age from source to destination with weight is something. A source to destination with the weight is equal to like this. I just want to show you this much. चलो, that is good. Age is there. अब मैं क्या कह रहा हूँ, I do not want to keep only the integer. Please pay attention. See the changes. Not want to keep only integer, but I want to maintain the whole age information. तो mainly destination और ये चाहिए था, मैंने source भी उसके अंदर ऐड कर दिया है. So you can have the age object there. You can have age object there. You can create a linked list of the ages. Okay, that is good. You go back, and then every time you want to add, what do you want to add? What do you want to add? I want to add an age, and this is the age from the source to destination to the weight for the given weight. But where is the weight? Oh, weight, I need to take it from the user. I'll take up that as well. All right, it is done. Not a problem. And you continue further. For this, what age we need? Okay, you continue further. We have got like a destination to source the weight. Okay, it is there. ये हम लोगों ने यहाँ पर सोर्स टू डेस्टिनेशन वाला एज ऐड कर दिया, यहाँ पर डेस्टिनेशन टू सोर्स वाला एज ऐड कर दिया, क्योंकि हम लोग डेस्टिनेशन के लिंक लिस्ट में ऐड कर रहे हैं. डन. Finally, you want to display that. So you are saying that for each age into that particular list, I want to just display that particular age. Go ahead and display the age. So और कुछ करना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. So इनपुट क्या देना है? इनपुट वही देना है जो हमने वेटेड ग्राफ के लिए दिया था. हमारे पास कहीं ना कहीं पर तो वेटेड ग्राफ का इनपुट होगा. लेट मी गो एंड फाइंड आउट वेटेड ग्राफ का इनपुट कहाँ पर है. पिछले प्रोग्राम में था. यस, दिस इज द इनपुट ऑफ द वेटेड ग्राफ. कॉपी पेस्ट, copy and paste, it is there. Go ahead, right click and run as run as Java application. Run a Java application, and here you see. I hope now you are able to see that from 0 there is a 1, 2 and 3 with 7, 4
and 8. Just check 1, 2, 3, a 1, 2, 3 with 7, 4, and 8. I hope you are able to see that. For the 1, it is weights are 7, 9, and 5. For 1, this is like a 7, 9, and 5. Right? Check again, execute that, and see if you are getting the similar output. Now you ask the question, तो सर हमें ये सारे के सारे इंप्लीमेंट करने हैं क्या? टू बी फ्रैंक नॉट. हम लोग यहाँ से आगे जितने सारे एल्गोरिदम हम लोग देखने वाले हैं, हम जितने सारे एल्गोरिदम हम लोग देखने वाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एल्गोरिदम वी विल बी यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स. So why we are using adjacency matrix? It is easier to understand, easier to implement. So we will go with that. तो जो हम लोग डिक्स्ट्रा करेंगे, जो हम लोग BFS DFS करेंगे, वो सब कुछ हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ही करने वाले हैं. बट एटलीस्ट एक बार आपको फील आ जाए कि हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर कनेक्टेड. तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको सबके बेसिक बेसिक इंप्लीमेंटेशन पहले आपको क्विकली करके दिखाऊं. तो आई होप आपने कॉपी पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है, रन करके देखा है, और बाद में जो आउटपुट यहाँ पर मुझको दिख रहा है, you have checked whether the same output you people are getting or not. Same output you people are getting or not. और यहाँ से आगे, यहाँ से